Difference between shares and mutual funds. When it comes to investing in equity, traders often talk about shares and mutual funds. What is the difference and how can you benefit from this? Let's find out. Stocks या shares basically कंपनी के total share capital के parts होते हैं. On the other hand, mutual funds are like a basket of securities. They are composed of multiple stocks, bonds, indices, etc. Mutual funds mainly दो types के होते हैं. Equity mutual funds, which consist of shares of companies, and debt mutual funds, which consist of government bonds and debt securities. अगर आप रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क लेवल फॉर म्यूचुअल फंड्स इज रिलेटिवली लेस देन स्टॉक्स बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज. बट फॉर दिस रीजन म्यूचुअल फंड्स में आपको फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट भी देनी पड़ती है. स्टॉक्स में आपको सिंपली ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होते हैं. शेयर्स के थ्रू यू कैन मेक रिटर्न्स थ्रू डिविडेंड्स एंड प्राइस डिफरेंसेस. म्यूचुअल फंड्स में आपको अपने कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल प्रॉफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ. Stocks can be a short-term as well as long-term investment, whereas mutual funds reflect better results when kept invested for the long run. Are you looking to invest in the equity market? With IIFL, it is as simple as buying stuff online. To know more, log on to www.indiainfoline.com. Subscribe to our channel to know the markets better. Download the IIFL Markets app to start your trading journey.